Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. Welcome to lecture 32. We had started rapid release granulation technology in the previous session. We'll be continuing our discussion on this technology. We had discussed the formulation related factors which are affecting the rapid release of the drugs, and we had completed the drug related factors. Today we will be discussing the additive or excipient related factors in our class. So the first factor which is related to the additives is complexing agent. An additive is able to improve the dissolution of a poorly water-soluble drug by forming a water-soluble intermolecular complex. The additive is called a solubilizing agent, and it must be present at an optimal concentration to maximize the solubility of a poorly water-soluble drug. These are the solubilizing agents for poorly water-soluble drugs, which are shown over here. For example, caffeine is a poorly water-soluble drug, and its solubility can be enhanced by adding sodium benzoate or sodium salicylate. Calcium theobromine is another poorly water-soluble substance, and its solubilization can be enhanced by incorporation of a solubilizing agent, that is calcium salicylate. Same is the case with iodine. Iodine is another example of poorly water-soluble substance. Its solubility can be enhanced by the addition of potassium iodide in it. Methylene is another poorly water-soluble drug, and its solubility can be enhanced by incorporating salicylic acid as a solubilizing agent in it. Quinine hydrochloride solubility can be enhanced by incorporation of urethane and carbamide as solubilizing agent. The solubility of riboflavin can be enhanced by adding nicotinamide or nicotinic amide as a solubilizing agent in the formulation. Theobromine and theophylline are another examples of poorly water-soluble drugs. The solubility of theobromine can be enhanced by adding sodium salicylate in the formulation, and the solubility of theophylline can be increased by adding sodium acetate and ethylene diamine in it. Cyclodextrins are the most commonly used additives. Cyclodextrins are bucket-shaped oligosaccharides produced from starch. As a result of their molecular structures and shape, cyclodextrins are able to entrap poorly water-soluble drugs in the hydrophobic cavities, forming water-soluble inclusion complexes with the poorly water-soluble drugs. The complexation and granulation of pyroxycam with beta-cyclodextrin by steam granulation in a single process improved in vitro drug release when compared to a physical mixture of drug and beta-cyclodextrin in the same composition. Additive स्पेसिफिकली कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट डिसोल्यूशन इंक्रीज करता है पोअरली वाटर सॉल्यूबल ड्रग्स की वाटर सॉल्यूबल इंटरमॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद. मोस्टली हम इन एडिटिव्स को सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स कहते हैं, और ये ऑप्टिमल कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होने चाहिए किसी भी फॉर्मुलेशन में यहाँ जहाँ पोअरली वाटर सॉल्यूबल ड्रग्स हैं, ताकि सॉल्युबिलिटी को मैक्सिमाइज़ किया जा सके. साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडिटिव्स हैं पोअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स की सॉल्युबलाइजेशन को इन्हांस करने के लिए. ये बकेट शेप्ड ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं और मोस्टली स्टार्च से ऑब्टेन किए जाते हैं. इनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और शेप की वजह से साइक्लोडेक्स्ट्रिन पोअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स को इंट्रैप कर सकते हैं अपनी हाइड्रोफोबिक कैविटीज़ के अंदर.
हाइड्रोफोबिक कैविटीज़ में इंट्रैप करने के बाद ये वाटर सॉल्यूबल इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं ड्रग के, जो कि पुअरली वाटर सॉल्यूबल ड्रग्स के इंक्लूजन वाटर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। कॉम्प्लेक्सेशन और ग्रेनुलेशन पायरोक्सीकैम की बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन के साथ अगर की जाए यूजिंग स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस, तो ये इन विट्रो ड्रग रिलीज़ बढ़ा देती है। जब हम इसे कंपेयर करते हैं किसी भी फिज़िकल मिक्सचर के साथ जो ड्रग का या बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन का है सेम कंपोजिशन में। स्टीम ग्रेनुलेशन ड्रग रिलीज़ काइनेटिक्स को बढ़ाती है। नॉर्मल ग्रेनुलेशन या नॉर्मल फिज़िकल मिक्सचर से इसी सेम कंपोजिशन में ड्रग रिलीज़ काइनेटिक्स कम होती हैं। Second type of additive that can affect the rapid release of drug is the effervescent agent. Effervescence is defined as the evolution of bubbles of gas from a liquid as the result of a chemical reaction. The generation of a gas, which is usually carbon dioxide, is usually achieved by a spontaneous chemical reaction between a soluble acid source and an alkali metal carbonate in the presence of water. The reaction can be triggered in the presence of a small amount of water, thus moisture protection of such oral dosage forms is paramount. This is because effervescence reaction when initiated will proceed spontaneously because one of the byproduct is water. Several researchers have found that the bioavailability of aspirin from effervescence tablet was higher than conventional enteric coated tablets. एफिवेसेंस को अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि बबल ऑफ गैस की जनरेशन होती है लिक्विड में, विच इज़ द रिज़ल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. जनरेशन ऑफ गैस यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की वजह से अचीव होती है, और ये स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एसिड सोर्स और अल्कली मेटल कार्बोनेट के अंदर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. ये रिएक्शन ट्रिगर कर सकता है बाय द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर. इसी वजह से जो मॉइस्चर प्रोटेक्शन है ओरल डोजेज फॉर्म की वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है. बिकॉज एफर्वेसेंस रिएक्शन जब इनिशिएट होते हैं तो ये स्पॉन्टेनियसली प्रोसीड करते हैं और किसी भी बाय प्रोडक्ट में रिजल्ट करते हैं, और मोस्टली बाय प्रोडक्ट वाटर होती है. बायोअवेलेबिलिटी एस्पिरिन की एफर्वेसेंस टैबलेट से ग्रेटर है कन्वेंशनल या इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स की. The third additive which can affect the rapid release is hydrophilic agent. In the formulation of rapid release granules, it is important to consider the formulation in its totality. It is always better to employ more hydrophilic agents which may be water soluble or water insoluble as binders or fillers in the formulation so that water penetration into the granules will not be impeded. Hydrophilic agents commonly employed include hydroxypropyl cellulose, hydropropyl methyl cellulose, lactose, microcrystalline cellulose, polyvinyl pyrrolidine, starch, and many others. These additives aid in wetting the poorly water-soluble drug. Polyvinyl pyrrolidine K30 was able to improve the wetting of nifedipine complex with 2-hydroxypropyl beta cyclodextrin, thus negating the decrease in nifedipine release brought about by the poor wettability and good compressibility of the complex. रैपिड रिलीज़ ग्रैनुलेशन में या रैपिड रिलीज़ ग्रैन्यूल्स के अंदर फॉर्मुलेशन को टोटल कंसिडर करना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और हाइड्रोफिलिक एजेंट्स की इनकॉर्पोरेशन ज़्यादा बेहतर होती है रैपिड रिलीज़ फॉर्मुलेशन में. ये हाइड्रोफिलिक एजेंट्स वाटर सॉल्यूबल हाइड्रोफिलिक एजेंट्स भी हो सकते हैं और वाटर इनसॉल्यूबल हाइड्रोफिलिक एजेंट्स भी हो सकते हैं. हाइड्रोफिलिक एजेंट्स मोस्टली एज बाइंडर्स या फिर फिलर्स की फॉर्म में फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट होते हैं ताकि वाटर पेनिट्रेशन ग्रैन्यूल्स में इफेक्ट ना हो. हाइड्रोफिलिक एजेंट्स जो कॉमनली रैपिड रिलीज़ ग्रैनुलेशन में यूज़ होते हैं उनमें ज़्यादातर सेलुलोज डेरिवेटिव्स हैं, जैसे हाइड्रोक्सीप्रोपाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज. इसके अलावा लैक्टोज और एविसिल या जिसे माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज कहते हैं
पॉलीविनाइल पायरोलिडीन और स्टार्च भी यूटिलाइज होते हैं इनकी अच्छी वेटिंग प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से। ये एडिटिव्स वेटिंग में हेल्प करते हैं, स्पेसिफिकली उन ड्रग्स की वेटिंग में हेल्प करते हैं जो कि पुअरली वाटर सॉल्यूबल हैं। पीवीपी के 30 निफेडिपिन की वेटिंग को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होता है, स्पेसिफिकली जब पीवीपी के 30 को कॉम्प्लेक्स करते हैं विद 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन के साथ। ये कॉम्प्लेक्सेशन निफेडिपिन की रिलीज़ को जो पुअर वेटेबिलिटी की वजह से होती है उसे कम करती है और गुड कंप्रेसिबिलिटी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है। Lubricant is employed in a formulation to facilitate the ejection of tablets from the dye. Excessive sticking of tablets to the punches or wear of punches and dyes will be reduced. Lubricant functions by forming a thin film at the interface of the tablet and dye, reducing the shear force during the ejection of the tablet. An optimum amount of lubricant must be used for each formulation in order to optimize the drug dissolution. Excess lubricant interferes with both disintegration and bioavailability by waterproofing the granules and tablets. Gordon found that doubling the quantity of magnesium stearate to be mixed with naproxen granules before tableting resulted in a slower drug dissolution rate. Lubricant मोस्टली हम फॉर्मुलेशन में एम्प्लॉय करते हैं जब टैबलेट फॉर्मुलेशंस फॉर्म करते हैं। स्पेसिफिकली लुब्रिकेंट्स टैबलेट्स की इजेक्शन में हेल्प करता है डाई कैविटी से। मोस्टली टैबलेट्स स्टिक हो रही होती हैं पंचेस में या फिर डाइज के अंदर, और ये रीज़न होता है पंचेस का पुराना हो जाना या उनकी वेयरिंग हो जाना। इसको रिड्यूस करने के लिए लुब्रिकेंट एक थिन फिल्म फॉर्म करता है इंटरफेस के ऊपर, टैबलेट इंटरफेस के ऊपर और डाई कैविटी के बीच में। ये शेयरिंग फोर्स को रिड्यूस करता है ड्यूरिंग इजेक्शन ऑफ टैबलेट, जिसकी वजह से टैबलेट डिफेक्ट कॉज नहीं होता। ऑप्टिमम अमाउंट की ज़रूरत होती है लुब्रिकेटिंग एजेंट की एडिशन के दौरान, बिकॉज एक्सेसिव अमाउंट के अंदर अगर लुब्रिकेंट ऐड है तो ये एक्सेसिव लुब्रिकेंट टैबलेट की डिसइंटीग्रेशन और उसकी बायोअवेलेबिलिटी में इफ़ेक्ट करेगा, बिकॉज ग्रैन्यूल्स के ऊपर ये लुब्रिकेटिंग एजेंट एक वाटरप्रूफिंग इफ़ेक्ट कॉज करता है, जिसकी वजह से जीआई ट्रैक्ट के अंदर वाटर पेनिट्रेशन नहीं हो सकती ग्रैन्यूल्स में। गॉर्डन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने मैग्नीशियम स्टीरेट की क्वांटिटी को डबल कर दिया नेप्रॉक्सिन के ग्रैन्यूल्स फॉर्मेशन में। नेप्रॉक्सिन की ग्रैन्यूल फॉर्मेशन में जब मैग्नीशियम स्टीरेट की लिमिटेड क्वांटिटी को डबल कर दिया गया तो नेप्रॉक्सिन की डिसोल्यूशन रेट कम हो गया, बिकॉज मैग्नीशियम स्टीरेट वाटर प्रूफिंग फिल्म फॉर्म कर लेता है नेप्रॉक्सिन के ग्रैन्यूल्स के अगेंस्ट, thereby it is actually reducing the dissolution rate of the drug. Surface active agents are also the excipients which can affect the rapid release of the drug. This additive is capable of forming aggregates called micelles above the critical micelle concentration. This is the major distinguishing feature between surface active agent and complexing agent. In an aqueous environment, the core of these aggregate resembles a separate organic phase, providing a suitable environment for poorly water-soluble drugs. Solubilization results in the increase in the aqueous solubility of drugs and aid dissolution. It is also able to improve wetting of the granules. Surfactant can also potentially disrupt the integrity of membranes to enhance drug absorption. Sodium lauryl sulfate was employed in the formulation of ibuprofen tablets to enhance ibuprofen dissolution. Sodium lauryl sulfate was incorporated during the wet granulation phase, and the resultant dissolution profiles were even better than commercial products. Surface active agents मिसल्स फॉर्म करते हैं अबव क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन या अबव CMC.
ये एक मेजर डिस्टिंग्विशिंग फीचर है बिटवीन सरफेस एक्टिव एजेंट और कॉम्प्लेक्सिव एजेंट के बीच में। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स इंटरैक्शंस करते हैं, इंटरैक्टिव कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं बिटवीन द ड्रग्स, जबकि सरफेस एक्टिव एजेंट्स मिसल्स या एग्रीगेट्स फॉर्म करते हैं अबव CMC। एक्वस इन्वायरमेंट में इन मिसल्स की एग्रीगेट्स की कोर रिजेंबल करती है एक सेपरेट ऑर्गेनिक फेज में, और ये सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स। सॉल्युबलाइजेशन इंक्रीज होती है एक्वस प्रिपरेशंस में इन फॉर्म विद द हेल्प ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट। सॉल्युबलाइजेशन जो रिजल्ट करेगी वो इंक्रीज एक्वस सॉल्युबिलिटी देगी ड्रग्स की, जो एक्चुअली इन टर्न डिसोल्यूशन को बढ़ाएगी। सरफेस एक्टिव एजेंट्स वेटिंग प्रॉपर्टीज़ को भी इन्हांस करते हैं ग्रैन्यूल्स की, और सर्फेक्टेंट्स पोटेंशियली डिसरप्ट कर सकते हैं इंटीग्रिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स को, देयरबाय इन्हांसिंग द ड्रग एब्जॉर्प्शन। सोडियम लॉराइल सल्फेट एक एग्जांपल है सरफेस एक्टिव एजेंट की। आइब्यूप्रोफेन की फॉर्मुलेशन में सोडियम लॉराइल सल्फेट की प्रेजेंस आइब्यूप्रोफेन की डिसोल्यूशन इन्हांसमेंट में एक रोल प्ले करती है। सोडियम लॉराइल सल्फेट वेट ग्रेनुलेशन में जब आइब्यूप्रोफेन के साथ इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो डिसोल्यूशन प्रोफाइल्स उसकी बेहतर होती हैं एज़ कम्पेयर टू दी कन्वेंशनल कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑफ आइब्यूप्रोफेन। Super disintegrants, the addition of disintegrant is to facilitate the breakup of tablet, thus presenting the micronized drug to the dissolution medium. In general, for a drug having solubility of 10 microgram per ml or less, disintegration rate of the solid dosage form has a profound effect on the dissolution profile. Super disintegrants represents a subclass of disintegrants that are associated with dramatic disintegration rates. Some of the common super disintegrants are cross-povidone, cross-camellose, sodium and sodium starch glycolate. डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की एडिशन टैबलेट्स के अंदर टैबलेट की ब्रेकअप में हेल्प करती हैं। टैबलेट ब्रेक होके ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट होती है, और ये ग्रैन्यूल्स सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होते हैं, देन एब्जॉर्प्शन होती है। लाइक आसान अल्फाज में डिसइंटीग्रेशन टैबलेट को ब्रेक करती है, दस एक माइक्रोनाइज ड्रग डिसोल्यूशन मीडियम में अवेलेबल होती है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। इन जनरल एक ड्रग जिसकी सॉल्युबिलिटी 10 माइक्रोग्राम पर ml या उससे लेस होती है, डिसइंटीग्रेशन रेट सॉलिड डोजेज फॉर्म में से एक इफेक्ट कॉज कर सकता है डिसोल्यूशन प्रोफाइल के ऊपर। सुपर डिसइंटीग्रेंट सब क्लास है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स की, जो कि इंक्रीज डिसइंटीग्रेशन रेट्स प्रोवाइड करते हैं। कॉमन एग्जाम्पल सुपर डिसइंटीग्रेंट्स की क्रॉस-पोविडोन, क्रॉस-कैमेलोज और सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट हैं। For reference, you can refer back to the previous lectures on controlled release technology, where I have explained it in detail that how do super disintegrants work and how they are formulated. So that's all from the formulation factors which are related to excipients and additives. For your questions and queries, use your HULMS portal, or you can email it on my official ID, or you can message on the official WhatsApp group. In next class, we will be discussing the granulation related factors which are affecting the rapid release granulation technology. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.